everyone, welcome back to my channel. I hope आप लोग सब खुश होंगे, अच्छे होंगे और मेरे दोनों चैनल देखते रहते होंगे. Guys, I'm Deepa and you're watching Busy Girl Live. So today's video is all about the newly launched NYB Pro Blush and Highlighter Palette. Guys, these have been launched in 2 shades and मेरे पास दोनों ही shades हैं. लेकिन guys, अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो please do consider subscribing to my channel. Click on the bell icon for the latest video and notification. And before starting this video, make sure that you like this video. And now, without further ado, let's get into the video. As I mentioned कि ये 2 shades में launch है. So this is 01 palette and this is 02 palette. अगर आप देखा जाए तो outer packaging दोनों ही palette की एक जैसी है. So guys, if I talk about the outer packaging, so यहाँ पे NYB की branding mentioned है. इधर लिखा है Pro Blush and Highlighter Palette. And if I turn this side, so here basically ingredient list mentioned है. Here it's written 8-in-1 palette, matte plus shimmer, lightweight, highly pigmented and blendable है. And guys, here the price is mentioned, which is amounts for $529. The manufacturing date is mentioned, the expiry date is mentioned here. And when you open this, so it opens like this. So जब हम बात करें इसकी inside packaging की, so inside packaging पे आपको यहाँ पे NYB से Pro palette लिखा होगा, जैसे कि इनकी blush palette में लिखा था. So same यहाँ पे NYB Pro palette लिखा हुआ है. It's a baby pink color packaging. And when you turn this, यहाँ पे manufacturing and expiry date mention मिल जाएगी. यहाँ पे shade name mention नहीं है. Shade name सिर्फ outer packaging पे mention है. This is palette number 1 and you can see that the shade name जो mentioned है वो सिर्फ outer packaging पे mentioned है. Inner packaging पे shade name mention नहीं है. So when you open this, here are your shades and here आपको यहाँ पे एक mirror मिल जाएगा. And basically इस type का मिलेगा ताकि आपका mirror गंदा ना हो, एक partition type का. And these is the palette number, shade number 1 shades. Moving on to the palette 2, these are the palette 2 shades. Here also you get a nice mirror and these are the shades. So basically आपको 5 matte shades मिलेंगे, which are your blushes, and 3 highlighter, which are your shimmer shades they say. So first I'll swatch this shade, this one right there. And it's a little bit chalky. These are the palette number 1, okay. So मैंने जो shade swatch किया, I have moved from here to जैसे मैंने यहाँ से ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, and then this one, okay. This is the palette number 1 shades looks like. So ये palette number 1 के shades है and ये fair to medium skin tone के लिए suitable है. So guys, now let's move on to the palette number 2 shades and there we go. So guys, I'll start from here and then further I'll move on to the blush side. So this is the basically shade range of the palette number 2. Now let's move on to the demo and review part in detail. Alright guys, so from palette number 1 we'll take this shade. And then we'll move on to this shade, and then further from the palette number 2 we'll take this shade, this one there, and then we'll move on to this shade. So for blushes we will mix all these blushes from the palette number shade number 2, okay, and for the palette number 1 also we'll mix all these blushes. This is the matte blushes, so we'll mix this and this, and then we'll apply. For highlighter, I think for my dress, we'll take this one there out from the palette number 1. And for the palette number 2, we'll take this one. So let's swirl the brush. This. First of the extra amount, and let's move on to this side. I'll mix all these shades. मैंने बहुत थोड़ा लिया है. अगर आप ज़्यादा अमाउंट में लेते हो तो क्या होता है, फिर आपको कम करना पड़ता है. Less is more in the makeup.
and then again from the shade number 2 I'll just take Now let's move on to the highlighter part. I'll just take this, just dust off the excess amount and apply. You can see the difference. इस side आपको shine दिख रही है and इस side नहीं. So this is how my base makeup looks like. और अभी मैंने makeup भी set नहीं किया है. So I just want to show you how it's looking without setting my makeup. And then we move on to the eye makeup. और जो shades मैंने आपको पहले बताए थे वो हम वैसे ही करेंगे. Moving on to the eye makeup, I'll take this one shade. This is a matte shade from blushes. I'll just fill my brush, remove the excess amount, and there we go. Guys, now let's move on to the shade number 2. I'll take this shade again, this one. So guys, for my lower lash line from palette number 1, I'll take this color, right? So from palette number 2, I'll take this shade for my lower lash line. Dust off the excess amount. For my eyelids, इसके लिए मैं ये वाला shade लेती हूँ. And from palette number 1, I'll take this shade. So guys, this is how my final makeup looks like after applying blush, highlighter and as eyeshadow. So now let's talk about these palettes and review them in detail. So सबसे पहले अगर आप दोनों palette लेते हो in case, तो यहाँ पे शेड नेम मेंशन नहीं है कहीं भी इनर पैकेजिंग पे. आई डोंट नो क्या इनका लॉजिक है. मैन्युफैक्चरिंग मेंशन है, एक्सपायरी मेंशन है, बट शेड नेम मेंशन क्यों नहीं है पता नहीं. और ऐसे इनके ब्लश पैलेट में था. सो अगर आपने ब्लश पैलेट का रिव्यू नहीं देखा है तो डेफिनेटली चेक इट आउट. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, यू कैन गो एंड चेक इट आउट फ्रॉम देयर. एंड मैंने इन पे दोनों पे डिटेल रिव्यू बनाए. इनके 2 शेड्स लॉन्च हुए ब्लश पैलेट में, उन पे मैंने ऑलरेडी डिटेल रिव्यू बना रखा है. So you can go and check it out. So moving on to the shade number 1. अगर हम shade number 1 की बात करें तो आपको मिरर मिलता है, which I already said, and आपको यहाँ पे 5 matte shades मिलेंगे, which are your blushes, okay? And here you will get 3 shimmer shades, which are your highlighters. The combination of this palette is amazing. अगर आप fair to medium skin tone के हो, you can go for a palette number 1. अगर आप medium deep dusky skin tone के हो, you can easily go for a palette number 2, which is shade number 2. तो हम यहाँ पे मूव करते हैं शेड नंबर 2 के. शेड नंबर 2 में अगर हम बात करें, you will get a 5 matte shades with are the blushes here. So you'll get a 5 blush shade which are there. 3 shimmer shades मिलेंगे which are your highlighters. So अगर हम देखा जाए तो ये complete eye palette भी बन सकता है, face palette बन सकता है, आपका ऐसा blush ऐसा highlighter बात करते हैं, तो काफ़ी अच्छा है. अगर हम ब्लेंडेबिलिटी की बात करें इसकी तो काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो जाते हैं. इफ़ आई टॉक अबाउट दी हाईली पिगमेंटेड जो ये लोग क्लेम करते हैं, तो ये पिगमेंटेशन वाइज एवरेज है. जैसे ये लोग क्लेम करते हैं 8 in 1 पैलेट है, तो ऑफकोर्स देयर आर 8 शेड्स. So 5 are towards your blush side and 3 shades are shimmer shades which is your highlighter shades. Moving on to the light weighted formula, ये लोग क्लेम करते हैं. ऑफ कोर्स ये लाइट वेट है क्योंकि काफ़ी देर से मैंने मेकअप अप्लाई करके रखा है. ऐसा मुझे नहीं लग रहा कि मैंने बहुत ज़्यादा हैवी अप्लाई कर रखा है, तो आप इसलिए बहुत ही लाइट वेटेड फॉर्मूला है ऑफ कोर्स. एंड इफ़ आई टॉक अबाउट द प्राइस पॉइंट, तो प्राइस की हम बात कर रहे हैं, ये रिटेन करता है 529 का. आप इसको डिस्काउंट पे चेकआउट कर सकते हो सो दैट आपको इसका बेस्ट डील मिले. सो यू कैन डेफिनेटली चेक आउट दिस पैलेट्स ऑन डिस्काउंट. So I hope you liked my this review and also guys, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर आप चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं अगले वीडियो में और भी आपके साथ न्यू लॉन्चेस शेयर करने वाली हूँ. सो मेक श्योर दैट सब्सक्राइब टू माय चैनल. अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर देना. तो इस वीडियो के लिए इतना ही. मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, आराम से नेक्स्ट वीडियो. बाय.